Take 5 minutes, sir. Start the class. Last की कहते हैं मालूम होता है की कहते हैं दावत वह भी नहीं आते हाँ ओके और एक जनों कौन की आते हैं कौन सी कॉलेज है इसमें कौन सा बत्ती गिरे ओके तुम्हें हाँ हेब्बाल के पास तो अंदर कुछ है कि वो वेटनरी के अंदर जाना कौन की एक जनो बहुत एज के कौन की थे ना हम फिजिक्स ले लेते बहुत एज पर्सन कौन की थे जेंट्स अब लेडी सो बायू को कौन बीना मैम कर कौन बायू को बीना मैम नहीं चलेंगे छोड़ डाले नो बीना मैम नहीं बायू को उन्होंने भी अच्छा लेक्चर उन्होंने भी अच्छा पढ़ाते हैं तुम्हें माँ तुम्हें कौन सा हाँ इंडियन ना ओके तुम्हें मैं भी रामैया वो तो सेम ब्रांच है तो न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं लास्ट क्लास में क्या तो भी डाउट है तो क्लैरिफाई डाउट्स क्या अभी शुरू कर डाली अब एक 2 प्रॉब्लम्स हैं बीच वन के वो कर डाल को न्यू फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर लिए मूविंग चार्जेस
हाँ उसमें से जाते सुनना मैक्सिमम देखो जो भी डिपार्टमेंट से रिलीज होता है सो यू शुड गिव द फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर दैट हैंडबुक रंदे या कुछ भी डिपार्टमेंट से मॉडल पेपर आते हैं जैसे अब नया क्या रिलीज कर रही है एलबीए करके बोल को लेसन बेस्ड असेसमेंट करके बोल को उसमें भी एवरी चैप्टर में थोड़ा लाइक इंपॉर्टेंस देते हैं तो उसमें क्या जो न्यूमेरिकल्स बहुत उसमें अब बिकॉज अब देखो जितने बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज में आपको स्ट्रेंथ नहीं है एक तो बच्चे रेगुलर नहीं आते प्राइवेट कॉलेज में आगे तो फीस ज्यादा रहती है तो जाको पढ़ना शुरू है बट बीबीएमपी और गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता अगर बोले तो दे हैव वेरी लेस स्ट्रेंथ और बच्चे भी ढंग से कॉलेज को नहीं जाते तो उसे ने क्या करती अगर को बोले तो एक सिस्टम बनाकर ही बोर्ड से तो ना क्या करते हैं एवरी एलबीआई से जो भी मॉडल डिपार्टमेंट क्या करते हैं दे विल बी पब्लिश्ड तो वो क्या होती है दैट विल बी फॉर एप्लीकेबल फॉर अनएडेड कॉलेज आल्सो तुम्हारे से कॉलेज में बट डिपार्टमेंट से जो भी पेपर रिलीज करते हैं तो उससे कंपलसरी तुम्हें प्रैक्टिस करना अच्छा तो उसके अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी तुम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते दैट इज फॉर योर स्कोरिंग मार्क्स को होता है बट डिपार्टमेंट से कौन सा भी पेपर अंदे उसे प्रैक्टिस करना तुम्हें बट मैक्सिमम लाइक कौन सा भी पेपर आया तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दैट ओनली दे लास्ट तो मैं कॉलेज में प्रिपेयर कर बना रही हूँ तो कॉलेज के लेवल तक रहता है बट क्या तो भी बोर्ड का दिए कर बोले तो वो भी प्रिपेयर करने का रहता है शुक्रिया This problem is over. 6 lead acid type of secondary cells, each EMF 2 volt. Just check out these problems. 6 lead acid type of secondary cells. Last class who attended, check this problem. We have done the problem. होगा ये. Okay. So take down the next question. What is the question number? Last class में जो problem solve करे थे 8 अब 9th question number 9 two cells of EMF 2 volt and 4 volt I think this problem also we have done check 2 cells of EMF 2 volt and 4 volt internal resistance 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in parallel होगा नहीं yes yes लिख लियो the positive terminal of 2 cells of EMF the positive terminal of 2 cells of EMF the positive terminals of 2 cells of EMF 2 cells of EMF 3 volt and 5 volt 3 volt and 5 volt internal resistances 1 ohm 1 ohm and 2 ohm 1 ohm and 2 ohm are connected by a wire of resistance are connected by a wire of resistance connected by a wire of resistance 8 ohm wire of resistance 8 ohm resistance 8 ohm negative
terminals, 8 ohm negative terminals, are connected by a wire of resistance, are connected by are connected 2 ohm are connected by a wire of resistance 8 ohm. Their negative terminals are connected by a wire of 6 ohm, 6 ohm. 8 ओम देर ठीक है, एक रेजिस्टर है 8 ओम का, their negative terminals are connected by a wire of resistance 6 ohm and a third wire of resistance and a third wire of resistance and a third wire of resistance and third wire of resistance 10 ohm, third wire of resistance 10 ohm is connected between midpoints, is connected between the midpoints of the wires, is connected between midpoints is connected between the midpoints between the wires find the currents, find the currents, find the currents, find the potential difference, find the currents, find the potential difference, find the potential difference and power dissipated in the circuit, and power dissipated in the circuit. Find the currents and power dissipated in the circuit. Okay, so this is the given data according to the question. यहाँ पर देखो two cells E1 and E2, E1 cell है 3 volt and E2 cell has 5 volt, have their internal resistance is 1 ohm and 2 ohm, okay, are connected with the wires. Positive terminal of the cell is connected to 8 ohm, negative terminal of the resistance is connected to 6 ohm and 10 ohm resistance is connected to midpoint. So first we have to draw the diagram. देखो इस डायग्राम में देखो तो ये कौन सा सेल ये E1 and what is the internal resistance as R1, correct? So let me take another cell. So this is E2 and the internal resistance is R2. अब यहां पर देखो तो यहां पर जो रेजिस्टेंस है थर्ड वायर, देखो 3 वायर है यहां पर, तो एक वायर क्या करती है हमें, एक वायर आपको बैटरी प्लस से बैटरी प्लस को कनेक्ट करती, सेकेंड वायर बैटरी के माइनस से बैटरी के माइनस को कनेक्टेड एंड थर्ड वायर इज कनेक्टेड बिटवीन द मिड पॉइंट्स. समझ में आ रहा है? सो व्हेन वी आर कनेक्टिंग दिस, देखो पॉजिटिव, सी वी हैव टेकन द पॉजिटिव टर्मिनल में व्हाट इज द रेजिस्टेंस वैल्यू इज कनेक्टेड, टू सेल्स में पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल. On the positive terminal how many wires are connected, sorry how many resistance, how much resistance is connected, 8 ohm. So we can take this resistor like this. अब यहां पर देखो I have taken the resistance is R1, similarly this is the negative terminal, so in negative terminal what is the value is connected, 6 ohm. So you can make this R1, R2, R3 and R4. See they have given 8 ohm resistor, which one, बैटरी के प्लस से, बैटरी के प्लस को कितने ओम रेजिस्टर कनेक्ट है, 8 ओम, तो इसे 8 को आई कैन राइट एज 4 ओम, करेक्ट? सो इसे 4 ओम और इसे 4 ओम, टुगेदर 8 ओम. why I am separately using, because they are asking, okay, the third wire is connected between the midpoints. समझ में? यहां पर देखो ये और एक वायर थर्ड वायर लेको,
इसके मिड पॉइंट में कनेक्ट कर वहीं करके बोल रहे हैं. सो आई कैन टेक द मिड पॉइंट हियर. So let us take this. So this is the midpoint. The what is the value of resistance? 10 ohm. ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बनता है. If you take this midpoint and we have the junction here between this and between this we have a junction. So the total 8 ohm resistance is 4 plus 4 I will take. तो इसे क्या करूं, इसे 8 ohm resistance को 4 plus 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4. Similarly, what is the second wire? Second wire कौन सा टर्मिनल में कनेक्ट होकर है? 6 ohm. 6 ohm resistor. So this I can take as 3 ohm and here 3 ohm. समझ में आया डायग्राम ये? देखो दो सेल सी ईएमएफ E1 E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 और हम यहां से एक वायर ले रही, पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर ले रही, दोनों पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट करें कितने ओम रेजिस्टर को? 8 ओम रेजिस्टर. और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में सेकंड वायर ले रही 6 ओम रेजिस्टेंस का. ठीक है, एंड 10 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड बिटवीन द मिड पॉइंट्स. तो मिड पॉइंट करके बोले तो इसके बीच में एक वायर आना, समझ में आ रहा है? तो दिस इज वी कॉल्ड एज अ मिड पॉइंट. सो आई कैन टेक अ 10 ओम रेजिस्टर. अब यहां पर देखो इस E1 सेल से फ्लो होने वाला करंट I1. Now the current will come to this junction. So what is the junction? It is a point two or more currents will meet, we call it as a junction. So when the current come to this junction, similarly this is the cell E2. So I2 current will flow from this. देखो यहाँ से I1 current flow हो रहा है, यहाँ से I2 current flow हो रहा है. So this I1 and I2 I will get the total current is I1 plus I2. Yes or no? The total current will flow from this resistor. Plus I2. So I want to find out the currents. देखो I1 कैलकुलेट करना, I2 कैलकुलेट करना, then you add, I will get the total current. Got it? Then we have to find out the voltage. According to Ohm's law, what is the voltage? V equal to I into R. So we have to find the voltage across the 10 ohm resistor. Resistor's value is 10. If you want to find out the voltage, we have to calculate the current. So current will get from this total current I. Then we have to find the potential power dissipated means how much current is used in the circuit. तो इसके अंदर कितना करंट यूज होकर है वो फाइंड आउट करना. एंड वी हैव दिस V into I. Got it? So this is the calculation we have to find out. So this is the diagram. From the diagram we have to consider the like Kirchhoff rule we have to consider. तो यहाँ से Kirchhoff loop को draw करो. So I can give this A, B, C, D, E and F. Correct? So we have to mark the Kirchhoff loop. तो यहाँ से क्या लेना? We have to take the clockwise direction. जैसे कि I have told you the tricks, we have to use the few rules use करना था. तो कहां पर सेल और रेजिस्टेंस यूज करते हैं, देयर वी हैव टू यूज द रूल्स. तो करंट और ऑब्जर्वेशन करंट, इसे क्या बोलते हैं हमें? दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन करंट. देखो ये आपको एक्चुअल करंट, ये I1 है, ये I1 करंट इस बैटरी से आने वाला करंट. तो यहां पर जो ये करंट ले रहे हैं, दिस इज द अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ लॉ वी आर यूजिंग द करंट, दैट इज ऑब्जर्वेशन करंट. तो इसे क्लॉकवाइज में ले लियो और इसे भी क्लॉकवाइज में ले लियो. तो इसे लूप 1 एंड दिस इज लूप 2. See, this is one loop. What is the loop? It is a closed path for the circulation of the current in the circuit. मतलब इस सर्किट में एक क्लोज्ड पाथ में चलने वाले करंट कुछ क्या बोलते हैं समय? लूप बोलते हैं. सो तो इस पूरे डायग्राम में वी हैव द टू लूप्स. तो लूप फर्स्ट लूप कौन सा बनता है? A B C F A. लूप 1. अगेन F C D E F सेकेंड लूप. गॉट इट? समझ में आया? सो दिस इज द डायग्राम अकॉर्डिंग टू द डेटा. जो डेटा देख रहे हैं उसके हिसाब से मैं डायग्राम को ड्रॉ कर ले. Now we have to we have to use the loop. So from Kirchhoff voltage loop to कौन सा लूप ले रही है हमें? A B C F A. देखो ये से स्टार्ट करे, A में चेंज करना, उसे लूप बोलते हैं. सो जिस पॉइंट से स्टार्ट करती है वहां से एंड करना. सो दिस इज द like Kirchhoff voltage loop to the loop A B C F A. तो पहले क्या करना? we'll write the components. ठीक है, पहले यहां पर क्या आ रहा है देखो. Now look at this diagram. यहाँ पर क्या हो रहा है? Like clockwise direction में चल रहा है. See, look at this arrow mark. पहले कौन सा टर्मिनल आ रहा है? पॉजिटिव. बाद में कौन सा टर्मिनल आ रहा है? नेगेटिव. तो सेकंड टर्मिनल में देखना, एरो मार्क को सेकंड टर्मिनल कौन सा टर्मिनल है? माइनस. तो क्या लिखना? राइट माइनस. तो व्हाट इज E1? आई राइट माइनस E1. ठीक है. अब यहां पर देखो एक्चुअल करंट का डायरेक्शन. एक्चुअल करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है? इधर जा रहा है.
बट ऑब्जर्वेशन डायरेक्शन ऑपोजिट में है, तो क्या लेना रूल के हिसाब से? ऑपोजिट में रहा तो माइनस, कौन सा भी ले सकती। देखो तुम माइनस लिए तो पूरे प्रॉब्लम में माइनस लेना, अगर प्लस लिए तो पूरे प्रॉब्लम प्लस लेना, एनीथिंग यू कैन अप्लाई। सो अकॉर्डिंग टू मी, देखो ये एक्चुअल करंट, ये ऑब्जर्वेशन करंट, दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाने से आई कैन टेक अस माइनस। अपोजिट डायरेक्शन में मैं क्या ले रहा हूं? माइनस कर को ले रहा हूं। अब यहां पर क्या हो रहा है देखो, लाइक अकॉर्डिंग टू द दिस वन किरचॉफ वोल्टेज लूप, तो क्या था स्टेटमेंट? द प्रोडक्ट ऑफ आई आर इज इक्वल टू द सम ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल्स इन द सर्किट। मतलब एक सर्किट में जितने भी सारे ईएमएफ रहती, वो इस ईएमएफ को सेल ईएमएफ को ऐड करना और इसके प्रोडक्ट को ऐड करना। अब यहां पर आई आर प्रोडक्ट क्या आ रहा है? I1 R1 आ रहा है, करेक्ट। देखो इसे तो हम एंटर कर डाले। अब इस सेल में क्या हो रहा है? I1 इंटू R1 इंटरनल रेजिस्टेंस ए भी होगा। नेक्स्ट वी कैन कम टू BC। तो BC में व्हाट विल, BC में क्या आ रहा है? देखो यहां से I1 आ रहा है, तो यहां से कौन सा करंट जा रहा है इस सेल को? I1 करंट। जो करंट निकलता है वो करंट यहां जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ लाइक जंक्शन रूल, द सम ऑफ द करंट इज एंटरिंग द जंक्शन इक्वल टू सम ऑफ द करंट इज लिविंग द जंक्शन। मतलब इस जंक्शन में जो भी करंट आता है, यहां से समझो एक 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहां से 5 एम्पियर का आ रहा है, यहां से 4 एम्पियर का आ रहा है। एग्जांपल, टोटल करंट कितना एम्पियर का हुआ? यहाँ 9 एम्पियर का हुआ। फिर क्या होता है, मतलब ये E1 सेल को तुमने 5 एम्पियर करंट वापस जाता है, फिर यहां से क्या होता है, तुमने 4 एम्पियर करंट वापस जाता है इसे। इसका इसका करंट 5 एम्पियर, इसका करंट 4 एम्पियर। अब देखो इन 5 और 4 मिलकर दोनों भी क्या होती है? टोटल करंट इज 9 एम्पियर। अगेन व्हेन दिस कम टू द जंक्शन सी, तो क्या हो जाता है? जो यहां से करंट निकले वो करंट 5 एम्पियर वापस इसे चले जाता है, तो यहां से अगेन 4 एम्पियर करंट वापस सेल को चले जाता है। दैट इज द लाइक किरचॉफ जंक्शन रूल बोलते हैं। मतलब जो बैटरी से जो भी करंट आता है, वो करंट इट विल गो टू द अनदर एंड ऑफ द बैटरी। तो सिमिलरली यहां से जो करंट निकलता है I2, तो वो करंट वापस I2 को आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये R2 रेजिस्टेंस में कौन सा करंट जा रहा है? I1 करंट। सो यू कैन राइट हियर। तो BC में क्या, देखो ये भी होगा, ये भी के बाद नेक्स्ट क्या है? BC। सो नो यू टेक दिस BC। तो BC में क्या बन रहा है? I1 R2, करेक्ट। I1 R2। अब साइन देखो क्या आ रहा है? देखो करंट आपको किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है, बट ऑब्जर्वेशन करंट क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है। देखो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो ऑपोजिट क्या यूज करना? माइनस, ठीक है। नेक्स्ट वी कैन टेक दिस वन। अब यहां पर आओ। सो व्हाट इज द टोटल करंट? मैं इस रेजिस्टर में चलने वाला टोटल करंट क्या है? I। और यहां पर रेजिस्टेंस क्या है? I इंटू आर, करेक्ट। सो I इंटू आर। नो व्हाट इज द डायरेक्शन आई कैन यूज? देखो ऑब्जर्वेशन करंट इधर, एक्चुअल करंट इधर ऑपोजिट में। अगेन यू कैन टेक दिस माइनस। समझ में आया? ठीक है। अब अगेन वी कैन कम टू दिस साइड। देखो ये साइड होगा, अब ये साइड को आओ, FA को आओ, लास्ट वन। FA में जाने वाला करंट क्या है यहां पर? देखो इसमें कौन सा करंट आ रहा है? यहां से I1 करंट नहीं। देखो इस पूरे बैटरी में, पूरे सर्किट में I1 करंट आता है, तो यहां पर कौन सा करंट आ रहा है? हम ना I1 R1। सो I1 R1। व्हाट इज द डायरेक्शन? देखो ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन। अगेन टेक दिस माइनस विच इज इक्वल टू 0। देखो मेन तुम्हें इक्वेशन लिखना, इक्वेशन लिखे तो समझ में आता। सो समझ में आया? वन सेकेंड रिपीट करना। समझ में आया? ओके फाइन। अब यहां पर देखो व्हाट यू नो, वी पुट द वैल्यू ऑफ E1। E1 की वैल्यू क्या है? -3 माइनस व्हाट इज I1 वैल्यू? वी डोंट नो। I1 कैलकुलेट करना। सो व्हाट इज R1 वैल्यू? 1। यहां पर देखो 1 इंटू I1 इज I1 माइनस व्हाट इज R2 वैल्यू? 3। 3 इंटू I1 इज 3I1 माइनस I डोंट नो, I कैलकुलेट करना। व्हाट इज R वैल्यू? कैपिटल R। 10R हो जाता है, 10I माइनस व्हाट इज R1? 4। 4I1 हो जाता है ये, विच इज इक्वल टू 0, करेक्ट। नाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस। यहां पर देखो, सी वन मोर थिंग, यहां पर दिस स्टेप -3I1। देखो यहां पर क्या बनता है? I के जगह क्या लेना? व्हाट इज I के जगह क्या है? I1 प्लस I2। सो यहां पर यू कैन राइट
I1 plus I2 into 10 shall I use? I की जगह I1 plus I2 minus what is R1? 4I1 4I1 which is equal to 0. Clear? अब नो अब ऐसे ऐड करो -3 माइनस I1. अच्छा ये 3 को वो तरफ लेकर चले जाओ, ये 3 को राइट इक्वल के वो तरफ शिफ्ट कर डालो. -I1 माइनस यहां पर व्हाट इज द साइन आई कैन यूज? देखो यहां पर नेगेटिव साइन आता है, करेक्ट, माइनस साइन. सो 3I1 minus to minus minus 10I1 minus to plus is minus 10I2 minus 4I1. ये -3 इधर आ गया तो +3 हो जाता है. अब सारे I1 को ऐड कर लियो. -10I1 minus 14I1 17I1 18I1 हो जाता है. -18I1 minus 10I2 which is equal to 3. I'll take this equation number 1. ठीक है, सिंप्लीफाई करो तो I'll get this answer. अब सिमिलरली क्या करना, वी हैव टू अप्लाई द लूप 2, सेकंड लूप को अप्लाई करो. तो इसे दिख रहा है? So I can use here from किरचॉफ वोल्टेज लूप टू कौन सा लूप पर? सेकेंड लूप. क्या रहा सेकेंड लूप में? एफ सी डी ई एफ, करेक्ट. सेकेंड लूप यूज करो. एफ सी डी ई एफ. पहले एफ सी क्या आ रहा है? व्हाट इज एफ सी? टोटल करंट इज आई. टोटल करंट क्या हो रहा है? आई. आई के जगह क्या लिखना? I1 प्लस I2, करेक्ट. अब यहां रेजिस्टेंस क्या बन रहा है? 10. नो व्हाट इज द साइन आई कैन यूज? यहां पर देखो एक्चुअल करंट का डायरेक्शन इधर जा रहा है, ऑब्जर्वेशन दोनों भी सेम डायरेक्शन में जा रही, सो टेक प्लस. नाउ वी कैन टेक दिस साइड. यहां पर देखो अगेन 3, यहां कौन सा करंट जा रहा है? सो I2. देखो ये पूरा करंट आ रहा है, क्या आ रहा है? देखो यहां से I2 करंट जाको ऐसा आ रहा है, तो क्या लिखना है यहां पर? 3I2. डायरेक्शन क्या हो रहा है? दोनों का सेम डायरेक्शन, सो यू कैन यूज एस प्लस. नाउ यू कैन कम टू दिस साइड. अब ये साइड में क्या है? वी हैव ईएमएफ, तो यहां पर क्या लिखना तुम्हें? सेकेंड सेल E2. तो E2 का डायरेक्शन क्या है? देखो एक्चुअल यहां पर एरो मार्क आ रहा है, सेकेंड टर्मिनल को देखना, तो माइनस से होते हुए प्लस को आ रहा है, ठीक है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल को आ रहा है, तो यहां पर क्या लेना? ईएमएफ को, सो प्लस E2 यू कैन टेक. अब इसके अंदर क्या करंट, कौन सा करंट फ्लो हो रहा है इस सेल के अंदर? I2 इंटू R2, करेक्ट. देखो I2 इंटू R2, बट दोनों का डायरेक्शन सेम रहने की वजह से टेक अस प्लस. अब नेक्स्ट EF. EF में देखो कौन सा करंट चल रहा है इधर? I2, सो 4I2 हो जाता है, दिस बिकम 4I2. कौन सा साइन यूज करना? दोनों भी सेम डायरेक्शन में जा रही, सो आई कैन यूज द प्लस साइन. I2 which is equal to 0. So now you multiply this 10I1 plus 10I2 plus 3I2 plus what is the value of E2? So 5 को तरफ लेकर चले हो, -5 हो जाता है आफ्टर इक्वल, बिकॉज EMF यू कैन ब्रिंग वन साइड, सो सिंप्लीफाई करना इजी हो जाता है. प्लस व्हाट इज R2? R2 इज 2, 2I2 हो जाता है ये. देखो ये टर्म 2I2 प्लस, so what is the term we have here? 4. already we have written 4I2. तो EMF की वैल्यू क्या हो जाता है? 5 वोल्ट. इधर आया तो -5 वोल्ट, तो वोल्ट लिखने की जरूरत नहीं है, टेक दिस माइनस. तो यहां पर सो प्लस, तो क्या था यहां पर? I2 R3. सो R3 का वैल्यू क्या है? 4 इंटू I2.
अब इसे लाइक ऐड करो, सो 10i1 कितने i2 है यहां पर, 10 प्लस 3 13 14 15 19 प्लस 19i2 which is equal to -5. Take this equation number 2. Now we have to do the elimination method. We have to cancel i1, so I'll get i2. Next step में cancel i2 करो, उसके बाद हमारा total current मिल जाता है. We'll put i1 plus i2 add. So what is the answer I can do? So equation 1 को 10 से अपोजिट से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 2 को 18 से मल्टीप्लाई करो. देखो जो नंबर आता नहीं अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर लियो. सो इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई बाय 10. सो 10 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 180 i1 minus 100 i3 which is equal to 30. So now you take this equation number 3. Similarly, you can multiply this equation with 18. So यहाँ पर क्या हो जाता है, 10 into 18 is 180 i1, correct? So कितना हो रहा है, सो प्लस नहीं, प्लस 314 i2 इक्वल टू -90. 314 आ रहा है, 342. इक्वेशन 2 को i2 आता सी है, दिस बिकम एज i2. अब इसे कैंसिल करो, तो ये तो देखो यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, डायरेक्टली कैंसिल हो जाता है. सो व्हाट इज द आंसर विल गेट, so how this i3 become here, so this become as i2 not i3, correct? Because i3 we don't have in the circuit, तो क्या होता है i2 आता है. सब इसे सिंप्लीफाई करो, ये तो कैंसिल हो जाता है, डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाता है. अब यहां से क्या आता है आंसर, प्लस माइनस 242 i2 आ जाता है, विच इज इक्वल टू -60. सो i2 विच इज इक्वल टू -60 डिवाइड बाई 242. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i2, बिकॉज माइनस है, माइनस में साइन आ जाता है, कितना रहा है, 0.247 एम्पियर. यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. तो यहां से i2 करंट निकल कर आ रहा है. नो नीड वरी अबाउट फॉर नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन बाद में एलिमिनेट कर लेंगे वो, बिकॉज द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट ओनली फॉर डायरेक्शन. जहां पर माइनस साइन आ रहा है तो खाली क्या हो रहा है, डायरेक्शन हमें लेने की वजह से आ रहा है, बट एक्चुअल वैल्यू ऑफ द करंट क्या रहा तुमने इसका मैग में लिए, तो यू विल गेट दिस. अब हमें i2 मिल गया, बाई 1 होना अगर बोले तो यू सब्स्टिट्यूट दिस i2 वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है? सो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके क्या मिलता है, व्हाट इज द आंसर, विल गेट -18 i1 -10. What is the value of i2? -0.247, which is equal to 3. So -18 i1 minus into minus is plus 2.47 आता है, which is equal to 3. 2.47. You take this -18 that side, it will get plus 18. So you'll take this 2.47 minus 3 which is equal to 18 i1. अब इसमें से माइनस करो, so what is the answer I'll get, 3 में से 2.47 गया तो 0.53. देखो इसमें से माइनस करो, 0. माइनस आ जाता है, ये माइनस एन एज इट इज. So which is equal to 18 i1. So we want i1. So i1 0.53 by 18 होता है.
what is the value of I1? Simplify करो 0.53 by 18 point 029 तो माइनस इन रहा तो माइनस एज इट इज तो यहां पर एम्पियर सो वी गॉट I1 वैल्यू तो I1 I2 वैल्यू वी गॉट सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट टोटल करंट देखो इसके अंदर टोटल करंट क्या होता है सो I विच इज इक्वल टू I1 प्लस I2 सो दोनों को भी ऐड करो देखो यहां पर भी माइनस यहां पर भी माइनस दोनों को ऐड करने से माइनस आ जाता है व्हाट इज द फाइनल आंसर 0.247 प्लस 0.02 0.267 आता है क्या 2 ampere now you can just ignore this negative sign यहां से नेगेटिव साइन इग्नोर कर डालो 0.276 ampere so this is the final answer total current तो यहां से बनकर आ रहा है total current की I1 we calculated I2 we calculated and we got I also just we have added I1 I2 add करके we got the answer अब दूसरा क्या कैलकुलेट करना so V what is V V equal to I into R so what is the value of current 0.276 into 10 ohm resistor so यहां पर क्या हो जाता है 2.76 वोल्ट यहां से वोल्टेज निकल कर आता है इसका मतलब इसमें वोल्टेज नेक्स्ट पावर so power which is equal to V into I so P which so 2 point into 0 point tell me the final answer V into I multiply बोलो so we got this V answer and I answer 0.276 कितना रहा है 1.76 0.76 0.7 what is the unit of power it is not ampere it is watt unit of power is watt 0.76 watt ठीक है so this is the answer it is this kind of questions will ask you for 5 mark numericals में 5 मार्क्स से पूछ दें तुम लाइए क्या बोले not 6 numerical only for 5 marks 6 marks पे ऐसा जाता है करना अच्छा लिख लियो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने 40 मिनट्स होगा देखो compulsory one question will come please on the side same question भी आ सकता है ना और कैलकुलेशन में तो खाली रूल कैसा अप्लाई करना तो सीधे हो अदर थिंग्स के कोई कैलकुलेशन सीधे कैसा करना तो मालूम होगा जरा पास देखो
जो कल का ऐसा प्रॉब्लम आया तो पहला आई वन को कैंसिल करो, आई वन की वैल्यू को सब ले इक्वेशन पुट करो, आई टू मिला तो उसको कट कर दो और इसको सॉल्व करो। इट इज अ कॉमन स्टेप्स। अब इसमें रूल अप्लाई करके सब्स्टिट्यूट करना, वैल्यू चेंज हो सकती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। होगा तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और एक प्रॉब्लम है इसमें इसका सॉल्व करने के बाद फिर हम नेक्स्ट आएंगे। होगा बोथ was online students completed. Have you noted this problem?
Okay. Yes, write down the next question. Question number 10. Resistances in cyclic order. Resistances in cyclic order. Resistances in cyclic order in a Wheatstone's network. In a Wheatstone's network. Wheatstone network. 2 ohm. 2 ohm. 2 ohm. 3 ohm. 1 ohm and 10 and 2 ohm. ठीक है? Resistances in cyclic order in a Wheatstone's network are 2 ohm, 3 ohm, 1 ohm and 2 ohm. Resistance of the galvanometer is 10 ohm. Resistance of the galvanometer is 10 ohm. ठीक है? तो इसे क्या बोलते हैं हमें? Resistance of the galvanometer. Because the galvanometer is made of coil, no? तो उसका खुद का रेजिस्टेंस रहता है, उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम रहता है. EMF of the cell is 1.2 volt. EMF of the cell is 1.2 volt and its internal resistance is negligible. तो इसका internal resistance क्या है? Negligible का मतलब क्या? 0 ohm. Negligible करको आया तो just we take the value of 0. What is the current through the galvanometer? Question में क्या पूछ रही? What is the current through the galvanometer? ठीक है? So this the data is given. Yes, यहाँ पर देखो like जो रेजिस्टेंस आर इन साइक्लिक ऑर्डर का तो क्या पी क्यू आर एस कंटिन्यूस देकर ही. सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम. तो पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लियो. फाइंड द करंट इन द गैल्वेनोमीटर IG. तो गैल्वेनोमीटर का करंट कैलकुलेट करना. सो यहां पर जो रेजिस्टर है P Q R S. सो साइक्लिक ऑर्डर का तो क्या कंटिन्यूअस रेजिस्टर कनेक्ट कर लेना. सो दे आर रेजिस्टर्स. ठीक है. यहां पर गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड. तो इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस का वैल्यू है 10 ओम. ठीक है. एंड इट इज गिवन EMF. तो इस सर्किट में क्या है? EMF मींस बैटरी इज कनेक्टेड. So EMF is 1.2 volt. 1.2 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है. ठीक है. दिस द व्हीटस्टोन नेटवर्क प्रॉब्लम. अब यहां पर देखो एक्चुअल इस बैटरी से आने वाला करंट क्या है? एक्चुअल करंट इज I.
सो टोटल करंट इज आई, इस बैटरी से आने वाला करंट क्या है, आई। तो अब यहां पर देखो, सो लेट अस टेक दिस ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी ई एफ कर को ले लियो, ठीक है, ब्रांचेस। देखो तुम ना क्वेश्चन में साइक्लिक ऑर्डर कर को देकर ही, तब क्या करना, पी क्यू आर एस, अगर साइक्लिक ऑर्डर नहीं पूछ कर है तो पी क्यू आर एस कर को ले लेना। कैन यू रिमेंबर व्हीटस्टोन नेटवर्क, द डेरिवेशन वी हैव सॉल्व्ड, सेम माँ को हमें क्यू को यहां लिए थे, पी क्यू सॉरी पी क्यू आर एस, यहां पर आर लिए थे, यहां पर एस लिए थे, बिकॉज एक्चुअली कनेक्शन वैसा करना। सो बट क्वेश्चन में क्या पूछ कर रही, दे हैव गिवन इन साइक्लिक ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर करके बोलते हैं कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूस कनेक्ट करना तुम्हारे रजिस्टर, दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड। जो साइक्लिक ऑर्डर का मतलब क्या, चारों रजिस्टर एक ही ऑर्डर में कनेक्ट करना, चेंज नहीं करना तुम्हें, ठीक है। तो यहां से देखो द टोटल करंट विल आई कम। अब ये देखो, ये बी सी डी आर द जंक्शंस, ये इज द जंक्शन, बी इज द जंक्शन, सी एंड डी ऑल आर जंक्शंस। तो जंक्शन का मतलब क्या, इट इज अ पॉइंट वेयर द टू और मोर करंट्स विल मीट। तो यहां से टोटल करंट आता है, तो इस जंक्शन में क्या हो जाता है, करंट डिवाइड हो रहा है, तो यहां पर जाने वाला करंट आई वन और यहां पर जाने वाला करंट आई टू, ठीक है। तो यहां से करंट क्या होता है, अगेन दिस आई वन करंट विल कम हियर, अगेन कम टू दिस जंक्शन, अगेन वी हैव द टू वेज, टू डायरेक्शंस। तो यहां पर जाने वाला करंट क्या हो जाता है, आईजी हो जाता है, तो गैल्वामीटर को जाने वाला करंट आईजी। तो यहां पर कौन सा करंट आता है, आई थ्री करंट आता है। व्हाट इज आई थ्री करंट, देखो आई वन में से माइनस कर दो, आई थ्री करंट मिल जाता है। सपोज यहां से तुम ना 5 एम्पियर आता है, 5 में से 2 चलेगा, बाकी का 3 इधर आता है। सो हाउ वी कैन राइट दिस, आई थ्री विच इज इक्वल टू आई वन माइनस आई जी, क्लियर। अब यहां से क्या होता है, आई जी करंट आ रहा है, तो यहां से भी आई जी करंट आता है, अगेन दिस यहां से आई टू करंट आता है। देखो आई जी आई टू करंट मिलकर यहां आता है तुम ना, सो द न्यू करंट इज आई फोर। सो व्हाट इज आई फोर करंट, आई टू प्लस आई जी। देखो माइनस आई जी प्लस आई जी कैंसिल होता तुम ना, तो यहां से जितना करंट आता है वता करंट इधर से भी आपको नाउ, ओके द करंट आई फोर करंट, तो यहां से आता है द आई फोर करंट, क्या हो जाता है, टोटल करंट बन को वापस आ जाता है, ठीक है। नाउ यू लुक एट दिस डायग्राम, हाउ मेनी लूप्स कैन वी टेक ऑन दिस, तो कितने लूप ले सकते हैं, बिकॉज दे हैव गिवन ईएमएफ आल्सो, नो प्रॉब्लम में ईएमएफ भी देकर ही तुम ना, अगर ईएमएफ नहीं देकर है तो कैन वी take only two loops, because they have given EMF also. So we have take this loop 1, loop 2 and loop 3, देखो ये ले सकती। थर्ड लूप आगो तुम्हें ए बी सी ई एफ जी भी ले सकती, नहीं तो ए डी सी ई एफ, देखो ऐसा भी ले सकती तुम्हें, ये पूरा बाहर का, नहीं तो यहां से ये लूप भी ले सकती, एनीथिंग वी कैन टेक। सो फर्स्ट वी हैव टू अप्लाई दिस जंक्शन रूल, तो यहां पर जंक्शन रूल अप्लाई करो। So I'll take this clockwise direction. This is loop 1. ठीक है? So you write here from KVL to कौन सा loop? A B D A. तो ये से स्टार्ट करें, ए में एंड कर डाले। अब यहां पर देखो, पहले ए लिख लियो, तो यहां पर P में क्या रेजिस्टेंस है, P में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, 2 ओम, करेक्ट, वैल्यूज लिख लियो इसके। P में 2 ओम, Q में 3 ओम, R में 1 ओम और S में कितना, 2 ओम, ठीक है। सो पी क्यू आर एस साइक्लिक ऑर्डर में लिखकर ही, अब पहले वी कैन टेक दिस ए बी में, देखो ए बी में क्या आ रहा है तुम ना, 2 आई वन आ रहा है, करेक्ट, 2 आई वन ए बी में, साइन बाद में अप्लाई कर लेंगे। अब इसमें बी डी में क्या आ रहा है तुम ना, आई जी इंटू जी, आई जी इंटू जी, ए बी होगा बी डी होगा। अब यहां पर देखो तो क्या रहा तुम ना, 2 आई टू हो जाता है, 2 आई टू, इसके बाद कुछ भी नहीं है, टेक जीरो। नाउ यू अप्लाई द साइन, साइन पुट करो, देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में गया क्या लेना, सेम डायरेक्शन में गया तो एक्चुअल करंट और ऑब्जर्वेशन करंट सेम डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर भी देखो एक्चुअल करंट ऑब्जर्वेशन करंट ए बी पॉजिटिव होगा, तो यहां पर देखो ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, अपोजिट, टेक माइनस, ठीक है। नाउ 2i1 प्लस व्हाट इज जी वैल्यू, जी का वैल्यू कहता है कि 10, सो 10 IG हो जाता है यहां पर,
10 ig माइनस 2i2 विच इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 2 कॉमन ले सकती हैं, देखो 2 10 2 पूरा इवन नंबर 2 को कॉमन ले लियो। यस, व्हेन यू टेक दिस 2 कॉमन आउटसाइड, i1 प्लस 5 ig माइनस i2 विच इज इक्वल टू 0। ये 2 को उधर शिफ्ट कर डालो, 0 हो जाता है। सो व्हाट इज रिमाइनिंग, i1 प्लस 5 ig minus i2, yes, which is equal to 0. Take equation number 1. This is equation number 1. After that we can't simplify. ठीक है, हम ना होना सो क्या, we have to find ig. So this is loop 1 is over. Now we take the loop second loop. So what is the second loop? Second loop देखो, again apply this second loop. Yes, from Kirchhoff voltage loop to b c d b. So b c क्या हो जाता है, 3, देखो डायरेक्टली आई एम राइटिंग, सो 3i1 माइनस 3ig, करेक्ट। देखो ये रेसिस्टेंस के साथ इसे मल्टीप्लाई करना, मैं डायरेक्ट लिख डालता हूं ig। अब यहां पर देखो क्या रहा तुम ना, सो दिस साइड, अब इस साइड में सो वी कैन टेक दिस, तो यहां पर i2 बिकॉज इट इज वन वैल्यू नो, i2 प्लस ig, i2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर ले इसे, फिर इसे 10 ig हो जाता है, देखो 10 ig, सो 10 igg होता है विच इज इक्वल टू 0। अब साइन अप्लाई करो, देखो दोनों भी सेम डायरेक्शन में रहे तो प्लस, अब यहां पर दोनों ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में रहा तो यहां पर माइनस, दिस यू कैन टेक एज माइनस। सो हाँ, तो इसे माइनस, माइनस, देन यहां पर देखो ये क्या हो रहा है, तो एक्चुअली अब इधर इसे भी क्या ना अपोजिट डायरेक्शन में माइनस, इस अप्लाई करो अब 3i1 माइनस 3ig प्लस इंटू माइनस माइनस i2 माइनस इंटू प्लस माइनस ig माइनस 10ig विच इज इक्वल टू 0। अब ऐड करो, होगा 1-2 मिनट, 3i1 माइनस i2 10 11 14, इसे सिंप्लीफाई करना नहीं होता अब। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से E1 को फाइंड आउट करो, सॉरी I1 को फाइंड आउट करो, बाद I2 को फाइंड आउट करो, देन यू विल गेट IG। सो यहां से सॉल्व कर लियो तुम्हें, ठीक है। विल कंटिन्यू आफ्टर द नमाज।
Slide change तो ये दो भी सेम हो गया, ये भी सेम होगा, ऑपोजिट माइनस, सो 2i1 igg minus 2i2, so 2i plus 10 ig minus 2i2, 2 10 ig 10i2, so I2 का फ्रॉम के will be cdv i3. मुझे तो सेम दिख रहा है, मुझे तो कहीं पर भी मिस्टेक्स नहीं दिख रही। नो बराबर है, मिस्टेक्स तो काम पर भी नहीं है, विल सॉल्व ट्राई इट, ठीक है। सब मुझे एलिमिनेशन मेथड i1 i2 वी हैव टू सॉल्व। अब इस इक्वेशन में से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, सो 3i1 प्लस 15, पहले ये लिख लियो, i1 ऑर्डर से लिख लियो, माइनस i1 के बाद i2 आता है, -3i2 प्लस 15ig which is equal to 0. You take equation number 3, okay. अब इक्वेशन 2 को, इन इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई विथ 1, इक्वेशन 2 को, सो क्या होता है 3i1 माइनस i2 माइनस 14ig विच इज इक्वल टू 0। अब हमें कैंसिल करना, सो क्या i1 कैंसिल करना है, तो यहां देखो दोनों भी प्लस है, साइन को चेंज करो, सो व्हेन यू टेक दिस नेगेटिव साइन, तो इसे माइनस करो, इसे प्लस करो, करेक्ट, साइन चेंज करना, तो ये प्लस हो जाता है। सो नो व्हाट इज द आंसर, ये तो कैंसिल हो जाता है, सो यहां पर प्लस i2, सो यहां क्या हो जाता है, -2i2 हो जाता है, करेक्ट, -2i2, यहां पर प्लस प्लस कितना होता है इन्हें, 29ig, क्लियर, 29ig। नाउ यू टेक दिस इक्वेशन नंबर, sorry, which is equal to 0, equal to 0, take equation number 4, equation number 4, but यहां पर देखो, like actually I told you 3 loops we have to apply, so और एक लूप भी अप्लाई करना पड़ता है,
सो कौन सा दिस लूप, देखो ए ले लेता हूं, ए बी सी ई एफ, करेक्ट। तो आई टेक दिस लूप, थर्ड लूप भी लेना पड़ता है। सो अब थर्ड लूप ले यहां पर, समझ में आ रहा है? सब यहां पर अप्लाई द थर्ड लूप फ्रॉम केवीएल टू कौन सा लूप, ए बी सी ई एफ ये ले सकती, नहीं तो ए डी सी ई एफ ये ले सकती, एनीथिंग यू कैन टेक। हाँ, नहीं ये ले लियो, इजी होता तुम ना, बिकॉज ये लियत क्या होता है आई वन माइनस आई जी, फिर लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाता है, तो इसे शॉर्ट में ले लियो। सो ए डी सी ई एफ ए, तो यहां पर पहले देखो क्या आ रहा है, ए डी आ रहा है, तो ए डी में व्हाट इज द करंट आई टू एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस एस टू आई टू, साइन बाद में पुट कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पर भी क्या हो रहा है, इन्हें आई टू प्लस आई जी हो जाता है, देखो ये पूरा आर वन, ये आई फोर, सो आई टू प्लस आई जी हो जाता है आई टू प्लस आई जी, वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर वी हैव दिस ओनली ई, सो सेल ई होता है, ठीक है। तो यहां पर वी डोंट हैव एनी सर्किट्स विच इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट। देखो यहां पर कुछ भी नहीं है ना, हाँ सी में ले लेना, सी में, अच्छा सी में क्या रहा है, आई टू प्लस आई जी लेकर हूं ना, देखो, ओके वेट वेट वेट, तो एक तो ये ले लिए, उसके बाद वन, सो आई टू प्लस आई जी इंटू वन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, बिकॉज रेजिस्टेंस वैल्यू इज वन, करेक्ट। तो ये होगा, अब इधर देखो, तो इधर क्या रहा तुम ना, करंट आई, तो ये करंट आई आ रहा है, तो आई क्या जा रहा है, टोटल करंट इज आई, ओके। अब यहां जो टोटल करंट जा रहा है आई इंटू आर होता है यहां, करेक्ट। देखो टोटल करंट आई और यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है आर, हाँ, तो ये आपको जीरो हो जाता है, बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू इज जीरो। अब नेक्स्ट सेल क्या है यहां पर, ई विच इज इक्वल टू जीरो, अब साइन पुट करो, ठीक है। देखो ये भी सेम डायरेक्शन में, ये भी दोनों सेम डायरेक्शन में प्लस हो जाता है, तो ये भी सेम डायरेक्शन में प्लस, कौन सा बोलो डायरेक्शन, ये भी और ये भी सेम डायरेक्शन होगा, ये भी सेम डायरेक्शन होगा, फिर देखो ये भी और ये भी सेम डायरेक्शन में होगा, तो ईएमएफ को क्या लेना, प्लस लेना, सेकेंड टर्मिनल, सो ऑल यू कैन टेक अस प्लस 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 प्लस, सो टू आई टू प्लस आई टू प्लस आई जी प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई 1.2 विच इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट। अब इसमें से ऐड कर लियो, टू आई टू प्लस आई टू इज थ्री आई टू प्लस आई जी विच इज इक्वल टू 1.2 माइनस 1.2, ठीक है। सो नाउ यू टेक दिस इक्वेशन नंबर, तो इसे इक्वेशन नंबर 3 करको रख लियो और इसे इक्वेशन नंबर 4 करको रख लियो, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई इक्वेशन 3 एंड 4, विल गेट द आंसर। तो यहां पर क्या करना तुम्हें, इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई बाई 3, बिकॉज यहां पर 3 है नहीं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, गॉट इट। तो इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई बाई 3, अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाता है, माइनस 6i2 प्लस कितना हो जाता है, 3 इंटू 29, 87 हो जाता है, 87 IG, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट। अब नेक्स्ट इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 को क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई करो,
So 3 2s are 6i2 plus 2ig. ठीक है. So यहाँ पर which is equal to plus into minus is minus 2.4. करेक्ट. क्लियर, समझ में आ रहा है. अब नेक्स्ट इसे कैंसिल करो. प्लस 6i2 माइनस 6i2 कैंसिल. अब इसमें क्या रहा है, 87 प्लस 2 इज 89ig विच इज इक्वल टू माइनस 2.4. अब यहां से ig होना, सो ig विच इज इक्वल टू माइनस 2.4 डिवाइड बाई 89. व्हाट इज द आंसर? 0.0026. सो यहां पर ig विच इज इक्वल टू 0.026 एम्पियर. सो दिस इज द फाइनल आंसर. नेगेटिव साइन को प्लस में ले लियो. डन. ओके. तो मैं भी बोलना था, नमाज को चलेगा तो अंडरस्टूड नहीं. देखो अब तुम्हें ईएमएफ देखो रहे तो ये भी लूप लेना तुम्हें. अगर ईएमएफ नहीं देखो रहे तो खाली दो लूप में फिनिश कर सकती तुम्हें. यस यस, 3 में करना. वैल्यू देखो रहे तो करना, नहीं देखो रहे तो नहीं करना. दैट्स ऑल. गॉट इट. ठीक है, लिख लियो. और लास्ट में देखो माइनस साइन आने की वजह से डोंट गेट कंफ्यूज्ड. तो माइनस साइन को क्या करो, तुम्हें पॉजिटिव में लिख डालो. दैट इज योर फाइनल आंसर. ठीक है, we'll continue next class. We'll start the new chapter. New chapter in the next class.